দেশৰ দুখন মহানগৰী, এখন দিল্লী, এখন হৈছে মুম্বাই। ৰাজধানী দিল্লীৰ অৱস্থা কাহিল, একে অৱস্থা মুম্বাই। আজি এই দুখন দেশত, এই দুখন ৰাজ্যত আজিৰ তাৰিখত লকডাউন প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো অতিকৈ কঠোৰ হ'ব। এই দুখন ৰাজ্যৰ অৱস্থা অসমৰ দৰে নহয়। আমি প্ৰথমে দিল্লীৰ আজিৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ এই দুটা দৃশ্য মন কৰক। বাওঁফালৰ দৃশ্য দিল্লী হাৰিয়ানাৰ সীমা আৰু সোঁহাতৰ দৃশ্য দিল্লী গুৰুগ্ৰামৰ সীমা। আচলতে এই সীমান্ত বন্ধ কৰি দিছে দুইখন ৰাজ্যই। হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে দিল্লীৰ পৰা কোনো লোকৰ অহা যোৱা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানাত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। দিল্লীত কৰ্মৰত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক লোকক হাৰিয়ানা আৰু গুৰুগ্ৰামৰ পৰা অহাৰ অনুমতি দিছে চৰকাৰে। লগে লগে দিল্লী হাৰিয়ানা সীমা আৰু দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ সীমাত এক অবাঞ্ছিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এইদৰে সাংঘাতিক ভিৰ হৈছে এই দুই অঞ্চলত, কিয়নো দিল্লীত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে হাৰিয়ানা আৰু গুৰুগ্ৰামৰ বহু সংখ্যক লোক। দিল্লীৰ নিচেই কাষত থকা এই অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে দৈনিক কাম কৰিবলৈ দিল্লীলৈ আহে। কিন্তু এতিয়া হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এই লোকসকলৰ আগমনত বাধা প্ৰদান কৰিছে। লগে লগে এক বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰশ্ন হৈছে, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এনে সিদ্ধান্ত লৈছে কিয়? আচলতে হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত শেহতীয়াভাৱে যি কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, ইয়াৰ বাবে দুইখন চৰকাৰে দোষাৰোপ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰক। তেওঁলোকৰ মতে দিল্লীত কৰ্মৰত লোকৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পি পৰিছে হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত। আচলতে ৰাজধানী নতুন দিল্লীৰ পৰিৱেশ এতিয়া মুঠেই সুখৰ নহয়। ৰাজধানী দিল্লী হঠাৎ হৈ পৰিছে কৰোণা নগৰী। অভাৱনীয় হাৰত দিল্লীত কৰোণা পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি। 24 ঘণ্টাত দিল্লীত 1106টা নতুন কেছ। 24 ঘণ্টাত দিল্লীত 13 জনৰ মৃত্যু। দিল্লীত এই পৰ্যন্ত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 16,281। দিল্লী এটা ৰেড জ'নলৈ পৰিণত হৈছে। অথচ এই দিল্লীৰ পৰাই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ শ্ৰমিক তথা অন্যান্য নাগৰিকসকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ পৰা অহা বহু লোক অসমত কৰোণা পজিটিভ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে। আনকি বিমানযোগে অহা লোকো কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। এনে অৱস্থাত চিন্তিত হৈ পৰিছে দিল্লী চৰকাৰ। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना ज़रूरी है कि कोरोना हो सकता है। थोड़ा सेफ रखना अपने आप को ज़रूरी है कोरोना से बचाने के लिए। लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी मैं अपनी बात रखूँगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने डेटा रखना चाहता हूँ कि कल कोरोना से दिल्ली में 13 डेथ हुई हैं। इसके साथ साथ 69 डेथ के मामले जो पुराने थे, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग समय पर डेथ हुई और उनकी जांच, उनके पूरी हमारी कमेटी ने जो जांच की या उन सब में या उन हॉस्पिटल से भी डिटेल मिली, वो और ऐड हुए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে দিল্লীত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও দিল্লী চৰকাৰে দাবী কৰিছে কৰোণাত আক্ৰান্ত লোক সন্তুষ্ট হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'লেও সেইজন ব্যক্তি চিকিৎসালয় যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। যিটো সময়ত অসম চৰকাৰে কৰোণা আক্ৰান্তৰ বাবে ঘনে ঘনে নতুন নতুন চিকিৎসালয় অধিগ্ৰহণ কৰিছে বা চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই সময়ত দিল্লীত আচলতে চিকিৎসালয়ত বিচনাৰ অভাৱ ঘটিছে। এনে অৱস্থাত দিল্লী চৰকাৰে কৈছে কৰোণা আক্ৰান্ত ঘৰত থাকিয়েই ভাল হ'ব পাৰে। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज़ ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का रेट करीब करीब 50% है। 50% के करीब ठीक भी होते जा रहे हैं।
और जो लोग पेशेंट बने हैं, जो लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, उसमें भी देश में भी ये देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में भी ये देखने को मिला है, और दिल्ली भी इसका उदाहरण बनती जा रही है कि 80 से 90% लोग होम क्वारंटाइन में रह के ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी फैमिली में, उनके आस पड़ोस में पैनिक हो जाता है कि अब तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। बिल्कुल पैनिक में ना आए। अगर कोई छोटा मोटा खांसी बुखार भी है या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, आपको हॉस्पिटल आने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की भी ये एडवाइस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी यही है, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अपने घर में एक कमरे, अगर कमरा अलग से है तो कमरा कर लीजिए, उस कमरे में रह लीजिए आइसोलेशन में। कमरा नहीं भी है तो अलग एक एक्सक्लूसिव कमरा नहीं भी अरेंज हो पा रहा है तो एक्सक्लूसिव बेड पे अपने रहिए। और ये समझ लीजिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ, कई बार ये सुनने को मिलता है कि आस पड़ोस में भी लोग पैनिक में आ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, हमारे पड़ोस में एक कोरोना पेशेंट निकला है, कुछ करिए, उसको ले जाइए। बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कोई छुआछूत का ऐसा रोग नहीं है कि आपके आसपास में कोरोना हो गया और बस उड़ के आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आने वाला है। इवन आपके घर में भी अगर किसी को कोरोना है, कई लोग मुझे कहते हैं जी हमारे छूने से हो जाएगा। छूने से कोरोना नहीं होता है। कोरोना किसी तरह के इनटेक से होता है, वो भी तब जब कि आप उस कोरोनाग्रस्त व्यक्ति के किसी तरह से उसके ड्रॉपलेट्स हैं उनको थूक के ड्रॉपलेट्स को टच करें और उसको मुंह से या आंख से या नाक से किसी तरह से उसको इनटेक में ले, तब कोरोना होता है। दिल्लीर उपमुख्यमंत्रीर এই বক্তব্যৰ পৰা গম পোৱা যায় যে দিল্লীৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। ৰাজধানী দিল্লী কাৰ্যত এতিয়া কৰোনা নগৰীলৈ পৰিণত হৈ পৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।